ये घोड़े खोलो, हुजूर दी इज्जत वास्ते खोलो। ये पूरी दुनिया ते सरदारी करनी, पूरी दुनिया ते पाकिस्तान जनाब पूरी दुनिया का इमाम बन जाए और सुपर पावर पाकिस्तान बन जाए तो फिर शाहीन हुजूर की इज्जत के लिए उड़े, खतब भी उड़े, अबाबील भी उड़े, और शाहीन भी उड़े, और अब्दाली भी उड़े, और एटम बम भी बाहर आए, और गौरी बाहर आए, खालिद टैंक भी आवे, और दरार टैंक भी आवे, ए मोहम्मद अरबी दी फौज भी बाहर आवे, ते पिछे लब्बैक दा नारा भी आवे. And because of that, France is extremely important for us. What are your requirements? What are your plans or ideas to strengthen this bilateral relationship? Do you have any particular ideas in mind that you would like to implement? Well, I mean, because of COVID, there was hardly any international travel or communication. You had virtual meetings everywhere. So, but ideally, I would like to meet President Macron and discuss our bilateral ties. Yes. Right. Have you been able to plan a phone call with him so far? Yes, I've spoken to President Macron twice. Okay. Okay. So when do you think Pakistan will appoint an ambassador in Paris? I think we are in the process of doing so. Right. Okay. Okay. Okay.